Everybody. Thank you for inviting me to speak on this topic, how to optimize iron chelation in thalassemia. Though we are on, all of us have been struggling with the links, but I think this is the way forward, and people old like me also have to learn how to do it. So I will start my presentation now. Next slide. What are the learning objectives of my talk today? Number one, we should know when to start chelation. If we are starting chelation, then we have to know which drug we should use. And the drug to use should focus to some extent as the age of the patient, because if a very young child comes, it's different. But otherwise, if a child comes with a specific organ involved, like heart or liver, then we have to choose accordingly, or any other disease like kidney disease or endocrine. Then, because the iron loading is different in non-transfusion dependent thalassemia and thalassemia, transfusion dependent thalassemia, so there are differences there as well. Then we often have to modify the iron chelation depending on the clinical scenarios, which can be because a change is due to side effects of drug, change in the dosages, or whether we want to do a combination therapy, or when to stop chelation, or chelation in special situations. Next slide. Key points in iron chelation are choice of iron chelator, compliance to the therapy. No matter how smart you are to prescribe a drug, it is important for you to find out in every patient whether your patient is going to be compliant with an injection or a tablet once a day, 3 times a day, or an injection twice a week, 3 times a week with oral drug. So this is your responsibility to develop enough confidence with the patient and somehow motivate him to be compliant. Otherwise, our knowledge of chelation fails. Many times we have to do dosage adjustments as we monitor these patients for iron overload. We have to sometimes make adjustment because there are ranges for drugs. Combination therapy has also become now a part of the treatment, and you can try an injectable with oral, or you can also, now there are many studies available in which even the 2 oral drugs can be used together. Sometimes we have to change the drug because of the side effects of a particular medicine. Next slide. This is these 2 slides which I'm going to show you. They almost all of you must have known. I will not go through the whole slide, but things which are important, like let's look at the 4th half-life of iron-free drug. In this, one should realize that desferoxamine has a short half-life, 20 to 30 minutes, and that is why it has to be given very slowly over a long period of time. Then is deferasirox, which is again a long effect drug and can be given once a day, once in 24 hours. Whereas deferiprone has got a short half-life, and that is why anybody who's using deferiprone in less than 8-hourly routine is actually wasting the drug because it's not effective. So whatever the total dose of deferiprone would be,
it has to be divided into 3 equal doses. Then I think let's move on to route of iron excretion. And this is also important because many a times patients come to you and they say, okay, my child is passing stools which are so red, I think he's passing blood. But one has to see that the fecal excretion is exclusively done on D-ferrosirox. So if your chelation is effective, then the stool will be red. Likewise, in urinary, which is D-ferriprone, the urine will be colored. And when you are using desferoxamine, then both urine and feces are going to be colored. After that, I think I'll go to the next slide, please, because I'll only pick up things which are important. In this, you have to just a glance on the metabolism, but mainly all the drugs are metabolized in the liver. So our only problem will be when a patient has a concomitant liver derangement, either due to iron overload or the viruses which are there. And they are easily transferred to these patients through blood transfusions. Next, I think we should concentrate on the recommended dosages. Dose for desferrioxamine is 30 to 60 milligrams per kg per day. Now, in this dose, which is 30 to 60, 60 is actually adult dose. And we rarely exceed 50 milligram per kg per day in children up to 18 years of age. If depending upon the load, but in fresh patients who are younger in age, we always start with 30 milligram per kg per day, and then we can build it up according to our monitoring. The dose of D-ferrosirox is 20 to 40, and even their recommendation is that you start with 20 and gradually increase it. And nobody should be started straight away with 40 milligram per kg unless you have an emergency in a patient. D-ferriprone dose is 75 to 100 milligram, and you should try. बंद कर दिया. किसने बंद किया? ब्लूटूथ से हटा दी. ये देखो. ब्लूटूथ बंद कर दी. Achha, okay. So that was about this, and next slide, please. I must touch the adverse effects, which is actually the last column. D-ferroxamine, you have to be very careful with the ocular, auditory, and bone growth retardation. Local reactions can occur, which are allergic. And sometimes you have to differentiate a true desferol allergy from latex allergy when you're using an infusion pump. In latex allergy, the infusion pump is not tolerated by the patient, but if you give it an intravenous infusion, the patients will tolerate it. And that is how we differentiate between the two. In D-ferrosirox, gastrointestinal problems are more, but you also have to look at the creatinine and liver functions. In D-ferriprone, gastrointestinal problems can be there, but they are rare. Common are arthralgia, which is present in 30% of the patients. And a more sinister side effect, which is
fortunately not so common, is agranulocytosis and neutropenia. Next slide, please. What are the special situations for iron chelation therapy? If a patient comes to you in heart failure, then you give intensive chelation intravenous therapy, which is called rescue therapy, because you want to pull that patient out of heart failure. I will talk about it a little later again. Then a special situation is also a recently diagnosed endocrinopathy, because there is evidence in the research that if somebody suffers with an endocrinopathy and you act very quickly and smartly, you can actually reverse the function of the gland. So that is why it is also a special area. We all know that in pregnancy, chelation is not allowed in the first trimester of pregnancy. So prior to pregnancy, you must, in a woman, lower the ferritin level. Though it has not been documented whether a high serum ferritin during pregnancy can affect the fetus. Bone marrow transplantation is again a condition in which all the bone marrow transplant centers, they require to lower the serum ferritin below 1000. Then there are life-threatening illnesses, like many a times these children come with gastrointestinal food poisonings are very common. And when these people come with these severe dehydration, and they also get a heart decompensation when they come like this. So it is important for us to know what to do there. And cardiopulmonary failures. A recent thing which I have seen in my practice, and I have now dealt with many cases, is PUO. Many cases which have reported to me suffering with PUO either have very rare things like brucellosis, but we also miss autoimmune hemolytic anemia giving rise to PUO. And actually, these are the patients who are exposed to a number of broad spectrum antibiotics, and no cultures become positive and their fever doesn't settle down. And the minute you start them on steroid, the fever goes away in 24 hours. So this is a new entity. And why I'm telling you this, this is a new entity, because in thalassemia, it is recommended that every time you transfuse a patient, you do an antigen antibody panel of the recipient as well as the donor, and then choose the donor according to the antibodies which are present in the patient. But this facility is not available even in the West centers. When you first start blood transfusion in a patient, you don't do a complete antigen antibody panel because this costs money, and finances are a huge issue when you come to manage thalassemia patients. Renal failure is also a thing, and I'll mention in the next slides what to do there, and osteoporosis, not to forget. Next slide. Emergency iron chelation therapy is done because if you give a continuous infusion, it reduces the exposure to the toxic free iron, because it is the
free iron, which is responsible for damage to the heart, to the liver, and to all the endocrines. So in this case, as I earlier said, that 50 to 60 milligram is recommended as a 24-hour infusion because its short life is very less, And for this, in other countries, there are bags available which contain the total amount of chelating agent, and it can be given to the patient with an infusion, but they are not available here. All adults for emergent iron chelation should be given 60 milligram per kg per day, but the dose has to be adjusted over 24 hours because you must remember that a fast running desferrioxamine can release histamine in the body, which will be, then it can be, you can have mistakenly take it as a allergy reaction. So they can have sweating, they can have nausea, retching, and fall in blood pressure. So because the histamine causes vasodilation. The next drug is deferriprone, and in emergent situations, you have to use 100 milligram per kg per day. If you don't, and it should be exact on 8-hourly dosages. If you don't do that, it doesn't work so well. Here it is important to remember that if you are doing a continuous 24-hour infusions, then you have to add vitamin C when the heart dysfunction settles, which is usually 3 months' time. And the first patient whom we, Tahir probably remembers and knows her, that child who, now he's a big girl, who was in Turkey and doing a job there. She actually reported to us in heart failure and was treated with me and Professor Masood Sadiq, and she is completely, now she has a completely normal MRI heart. Next slide, please. Because 75% of the deaths are due to cardiac failure in thalassemia major, even in our country and worldwide. That is why it is important to mention that deferriprone, which is a chelator which takes out iron from the tissues, is more cardioprotective than the rest of the two drugs, unless it is a continuous intravenous 24-hour infusion of desferol. And it is a panel who is really now authority even today, LIA. He did a study in 2006 and he said monotherapy of deferriprone, he proved, had a better improvement with patients in the left ventricular ejection fraction, LVEF. Now, deferriprone, which is, if given as a monotherapy for 3 years, it was also associated, पिछली slide आप अभी रखिए, associated with significant increase in LVF, and that was also studied again in 2012. And if you look at other retrospective studies, again, you will find out that DFP monotherapy, it is superior in cardiac protection as compared to desferol. Next slide.
So let's look at the, now, next slide, please. Recommendations, which are, Mubin, next slide. Okay. Recommendation, okay. So we'll just do first the general recommendations, and then I will just talk a little bit about different conditions. And the rest of the time I would use to answer your questions, because you people work with patients and you come in with different scenarios. So it is important that I and you, all of you, share our mutual experiences and learn from each other how to get out of it. So transfusion-dependent thalassemia patients should be commenced on iron chelation therapy after 10 to 12 transfusions on the lowest dose to start with any drug, but preferably now, internationally, the recommended drug to start on in small children is D-ferrosirox. Or if the serum ferritin rises more than 100 microgram per liter on 2 occasions. When you are relying on ferritin, which is a good measure of iron overload in the liver, but not in the heart, then you should measure the ferritin 3 to 6 months interval. In non-transfusion dependent thalassemia, the cutoff to start iron chelation is 800 microgram per liter, because it is lower in non-transfusion dependent thalassemia, because in NTDT, the serum ferritin does not correlate so well, and the deposition of iron is patchy. But if you do a liver iron, then you can have a good idea if the liver iron is more than 5 milligram per gram dry weight. But again, this is not available to us, and we only use serum ferritin. Regarding serum ferritin, I must share this, that serum ferritin has to be done in a condition when patient is not suffering with any intercurrent infection, or if the patient has positive for anti-HCV, then the serum ferritin will not be reliable. So you have to consider this, though we do check for anti-HCV, but sometimes we are so alarmed if somebody comes with a 4,000 or 6,000 ferritin that we actually forget. But one must know that serum ferritin is an acute phase reactant as well, and will be higher in children, especially younger children, in flus, coughs, diarrheas, or pneumonias, or any other infections. So you have to make room for that. If possible, which is of course not possible to most of our children, the latest recommendation is that you must do an MRI heart and liver, because the MRI of the heart and liver are the only thing which give us exact iron overload in our patients. And this should be done initially and also on regular intervals. And they give different timings, but in our country, even if somebody has the facility, I don't think even a good socioeconomic family, you can do it earlier than a year, because it's still costly for most of them. Next slide. Cardiac assessment, as I said, can be done with left ventricular function, because in thalassemia major, diastolic dysfunction is the first thing to come.
and which shows us cardiomyopathy. If your patient is a non-transfusion dependent thalassemia, then it will be the pulmonary hypertension which will come first. Many times we use the examination, cardiac examination, to look at the P2 and tricuspid regurg to differentiate our patients who are non-transfusion dependent thalassemia and transfusion dependent thalassemia. Because we like to protect the non-transfusion dependent thalassemias by using drugs which increase the fetal hemoglobin. The other assessment of heart is MRI, which is really not affordable to most of the patients. As far as the cardiac echocardiography is concerned, I will request all of you, because I have seen it in my practice day in and day out, that even when there is a loud P2, a prominent tricuspid regurg, and a prominent MR, then the report comes, the last sentence is, the heart is structurally and functionally normal. So it is important for you to go the above lines which they have written. And in those lines, they would write there is moderate pulmonary hypertension or some other thing is ejection fraction, and these all the things, if you see, you realize that the last declaration of the echocardiographer does not tally with your assessment. You can either request a repeat, or if you're very confident, like patients come in heart failure, and I am very confident about whether it is left ventricular failure, right ventricular failure, or biventricular failure, I start the treatment right away, because it really saves your patients. Then again, a condition which we dealing with thalassemia many a times miss, and that is adult patients, especially who are more than 14, 16, they complain of palpitations. Now, palpitations can easily be seen as anxiety or anemia, but you should remember that it could be a symptom because of cardiac arrhythmias. Because when the iron is deposited close to the conducting tissue, then cardiac arrhythmias can be there, which in a quick examination of the patient, you may not be able to differentiate it. Don't ask for ECG in every patient. The liver assessment, patients over the age of 10 years should be assessed for liver fibrosis, which is the first change because of iron. But if patients have high liver iron load, or they had a previous hepatitis C, which was treated and the patient became hepatitis C negative, or you had documented fibrosis, they should be checked 6 monthly for hepatocellular carcinoma with an ultrasound. And you should also repeatedly see them with ELISA anti-HCV, because most of my patients, they become hepatitis C positive again. And the viral load is such that you have to give them repeat treatment. The endocrinal assessment, you should either investigate a patient
when you clinically feel that he has some signs and symptoms, referring to an endocrine, or you know in a patient that the serum ferritin is above 2,500 for more than 3 months. The international cutoff for assessing endocrinopathies is above the age of 10 years, but in our country, the children who are heavily iron loaded because of no guidance for chelation or not being able to uh, afford the chelating therapy, they come with a endocrinopathy much earlier. Next slide. Then there are certain recommendations like, patients, we all know that thalassemia can give rise to interstitial nephritis. They can also have concretions and they can also have renal failures because of the drug they use, which are poorly monitored. So one has to see when a patient comes to you with a specific complication that, like I said, if a patient comes to you in heart failure, your first priority should be deferriprone. Or if your patient is very bad, then a combined intravenous and deferriprone. Like that, when a patient comes to you in renal failure, then deferriprone is the only drug which is not accumulated in renal failure, and you can use it. But otherwise, we know that desferrioxamine, can be used in renal failure, but very low dosage. And the same is true for deferrasirox, because deferrasirox also causes renal damage. So you also need to see that the patient is coming to you, which complication. In my adult population, I have a huge problem trying to maintain a balance between and my wishful serum ferritin level and the bone health. Because it's not good for me to have a patient whose bone density is good and you are trying to use any dose. But if my patient has severe backache, leg pains, difficulties sitting up on an Indian toilet, or not being able to climb stairs, and the DEXA is really bad, then I have to compromise on lowering the iron in that patient. And then I move to lower levels of iron and try to reduce the blood transfusion in that patient by giving that patient hydroxyurea. And I mentioned here that there are Iranian studies which are available, because in Iran, they have used the hydroxyurea in adult patients, and they have reduced the quantity of blood they require. So in osteoporotic patients, you really have to get a good balance between bone health and the amount of chelating agent and the amount of blood which you are giving, because we all remember that a blood bag has 200 milligram of iron. Next slide. And I thank you all for listening to my talk, and I invite all of you to ask me questions, because that will make things more clear for all of us.
Ma'am, here's a question from Mariam Raza. How frequent ferritin should be checked routinely? Yeah. Ferritin How frequent ferritin should be checked routinely? routinely. Earlier than 6 months is not advisable. 6 months, and if your patient is compliant, you can also go for yearly. But if a patient has a complication like heart failure, like an endocrinopathy, or a recent event of infection or something, and you feel in this patient it is very important for you to maintain a good level very quickly, then you can do it 3 monthly. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहिर हूं। तो उसमें चैट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। मैम, हम आमतौर पे यानी आयरन चेलेशन के बारे में लिखने में और उसमें तो ज़रूर फिक्रमंद होते हैं कि कौन सी ड्रग किसी पेशेंट को लिखती। क्या कुछ और फैक्टर्स भी हैं अदर देन सिंपल आयरन चेलेशन एंड इट्स रिकमेंडेशन इन द लॉन्ग टर्म डिटरमिन कि आयरन बैलेंस कैसा हो और पेशेंट का आयरन स्टेटस कैसे इंप्रूव हो सकता है, लाइक ट्रांसफ्यूजन एंड द नीड ऑफ iron transfusion, need of platelet transfusion over the long run and the food changes that they need to do? वो तो देखिए काफी हद तक मैंने ये चीज मेंशन की है कि आपको इनिशियली इस चीज का पता होना चाहिए कि आप एक पेशेंट, बिकॉज एक पेशेंट आपके पास 3 साल की उम्र में आ सकता है, उसमें आप कोई कार्डियक या लिवर डिजीज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते और आप इजीली डीफेरासिरॉक्स शुरू कर सकते हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो 12 साल का है और वो आया है because he has edema and he has tachycardia and you have picked up some murmurs. So that patient, you must then see whether you would like to have monotherapy with deferiprone or you would like to have a combined therapy with deferiprone and desferal. Because in this patient, you really would like to reduce the serum ferritin quickly. और इसी तरह अगर एक पेशेंट आया ही आपके पास हार्ट फेलियर में है, तो उसको तो फिर बेहतर यही होगा कि आप उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन डेस्फरॉल की दें। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि जब पेशेंट आए आपके पास तो उसके साथ क्या है। और जब भी कोई पेशेंट आपके साथ आए और आप हाई डोजेजेस शुरू करना चाहते हैं या आप कंबाइंड थेरेपी शुरू करना चाहते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर कि इन चीजों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मॉनिटरिंग भी ज्यादा जल्दी करेंगे। डीफेरिप्रोन यूज कर रहे हैं तो 10 दिन के बाद सीबीसी करवानी लाजमी है। सीरम क्रेटिनिन डीफेरासिरॉक्स कर रहे हैं तो आपको सीरम क्रेटिनिन एएलटी कराना लाजमी है। तो ये तो फिर सारी चीजें जो हैं आपको अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स देखनी होगी कि आप कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं और उसका कौन सा साइड इफेक्ट आ रहा है और आपने कौन सी ड्रग को ऊपर करना है, कौन सी ड्रग को नीचे करना, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन डैमेज इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। I don't know if I have answered your question. You can ask another question if I haven't made it clear. What are the indications for combined 2 oral chelators and 1 IV plus oral? What's the difference between these two? Somebody has asked a question, what is using 2 oral drugs? 2 oral drugs can be used when you think that the serum ferritin is higher than 2,500, and which usually is. There are studies available and you can use them. But in this, the first thing is that that patient should be on a monotherapy with the maximum dosages. Like if somebody comes to you and his serum ferritin is, he's taking deferiprone, then the first thing to do is to make sure whether he's taking with 100 milligram per kg per day. Likewise, if
deferrosirox, then is he taking 40 milligram per kg per day? For how long? 3 months at least. Or if it is desferol, then up to 18 years, 50 milligram per kg per day, and 18 and above, 60 milligram per kg per day. Then only you should think of combining two drugs. Because combining two oral drugs, जो है ना, ये हमारी सोसाइटी में इतना हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो डीफेरिप्रोन की गोलियां बहुत बन जाती हैं और उसको 3 दफा खाना है, ठीक है जी। और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा आपने डीफेराप्रॉक्स भी सुबह सवेरे खानी है। वो चले आप 2 अवेलेबल है, एक नेहार मुंह है, एक खाने के बाद है, एक पानी से निकली जा सकती है, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑल दिस, यू नो। तो हर पेशेंट के साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज के साथ वो कंप्लाई बेहतर करता है। और कुछ ऐसे आपके पास पॉपुलेशन है जो कि इंजेक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम डोज ऑफ 1 ड्रग कर लें और उसके साथ आप हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा उनको कहें कि वो डेस्फरॉल लगा लें, तो शायद उनकी कंप्लायंस जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। Question: I have desperate injections are mostly short nowadays. What other options do we have in Pakistan? एक क्वेश्चन डेस्फरॉल के बारे में आया है। डेस्फरॉल के अलावा ऑस्फेरॉल भी मिल जाती है बलोचिस्तान में, कराची में, लेकिन बहरहाल वो भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है और हमारे पास डेस्फरॉल के कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट द ओरल ड्रग्स। How to do iron chelation in patient who presented with heart failure? हाउ क्या? Heart failure. अच्छा, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जब आपके साथ पास आते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हार्ट फेलियर जो है वो किसी इन्फेक्शन से हुआ है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो या तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ या निमोनिया के साथ आते हैं और वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। इस सूरत में फौरी तौर पे आप चेलेशन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रावीनस डेस्फेरॉल आपकी इन्फेक्शन को ज्यादा करेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेशेंट हैजंट कम with sepsis, and if so, treat the sepsis first. But if you think that the CBC is normal and CRP is normal and everything is normal, then you can straight away start with intravenous desferol. Okay. What are directly reactions in addition to iron chelation for तुम्हारी TDM? आवाज उनको जा रही है so that they know which question I'm answering. Sure. ये Provide iron Rehan is chelation and reading the overload. questions and I'm replying them. जी So I मैडम, we hope can hear you. Yes. you can hear Rehan as well. Yes, ma'am. Yes. Okay. क्या है? What are the direct पूछो बोलो। reactions in addition to the iron chelation for TDTM to avoid iron overload? TDT TDTM. M क्या हुआ? TDT तो थैलेसीमिया, ट्रांसफ्यूजन Transfusion डिपेंडेंट dependent थैलेसीमिया। thalassemia major. हाँ, तो उसमें वो क्या कह रहा है? क्या मालूम क्या करना To चाह रहा avoid iron chelation load. What are the directly restrictions in addition to the iron chelation for TDMT to avoid iron overload? नहीं, आयरन ओवरलोड तो अवॉइड नहीं आप कर सकते, लेकिन मैंने अभी मेंशन किया कि सेप्सिस जो होता है ये इसकी सूरत में आप फॉरेन इंट्रावेनस डेस्फरॉल नहीं शुरू कर सकते। So you really have to differentiate. And I must tell you here that it is very common for these patients to come with neutropenia. और मतलब 500 तक वो आ जाते हैं न्यूट्रोफिल काउंट के साथ, और उसमें हमेशा सस्पेक्ट करें कि देयर इज अ सेप्सिस समवेयर। इट इज ऑलवेज दैट, ठीक है। और बाकी ये भी पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया में ल्यूकोसाइट काउंट बहुत हाई होता है, 40 to 50,000 तक भी चला जाता है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको गलती से वो लोग कह देते हैं कि शायद ल्यूकीमिया है इसको, तो ये भी जहन में रखें।
Patient on hydria, can they be safely given deferriphone as both reduce No, neutrophil? you cannot give hydroxyurea and deferriprone together. Deferriprone is contraindicated when you're using hydroxyurea. If a patient is already on deferriprone and you want to start hydroxyurea because you want to lower the iron overload, then you have to change the chelating agent. When patient on deferriphone has low neutrophil due to any infection, how can they just be adjusted? In my 48 years of experience, I have seen neutropenia in a single patient who was actually a Blackfan diamond syndrome, and hydroxyurea is deferriprone is contraindicated in Blackfan diamond syndrome. She was the only girl who was shifted to me from Sheikh Hospital, and she did not survive with me because she was bleeding from the gut like anything. अब उसके अलावा मेरे पास कभी डीफेरिप्रोन में ए ग्रैनुलोसाइटोसिस आया ही नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों की पॉपुलेशन में आता है तो सबसे पहले आप सेप्सिस रूल आउट करें, और जाहिर है वो तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपने बंद करनी है ड्रग। Okay. So the questions, I don't have any questions on. Yeah. Can I ask the question, Dr. Nadeem, from my side? Dr. Nadeem Karam, I want to ask. Sure. जी, जी, Madam, जी. my question is that now as the people are using hydria and thalidomide, what is the impact of these two directly or indirectly on the chelation therapy? That is the concern. Regarding this, I have already requested one of my very esteemed colleagues to do a study on this. Primarily, the results are good. I don't use thalidomide at all because Thalassemia International Federation, I'm also a facilitator for them, and they do not recommend thalidomide in the treatment of thalassemia major. Even in UAE and Saudi Arabia, this drug is not used for treatment of iron over in thalassemia patients. So I cannot use it. If I use it, every shopkeeper will start giving thalidomide, and I can't do that. That is number one. Number two, a lot of my patients who are non-transfusion dependent thalassemias, they are getting married, having children. And I can't use thalidomide in girls. So why start a drug which is internationally not recommended? जो मैक्सिमम स्टडीज मैंने देखी हैं, अगर आप भी सर्च आउट करें थैलिडोमाइड, बाहर के मुल्कों में थैलिडोमाइड वो तब यूज करते हैं अगर हाइड्रोक्सी यूरिया फेल हो जाए। जब हाइड्रोक्सी यूरिया काम नहीं करती तो उसमें वो फिर साथ थैलिडोमाइड ऐड करते हैं। लेकिन बच्चों में सिर्फ एक पेपर है छपा हुआ जिसमें 5 बच्चे थे, बाकी सारी स्टडीज में जिनमें उन्होंने थैलिडोमाइड यूज की, इट वाज इन अडल्ट पेशेंट्स। सो इट इज सैड that Dr. Tariq from KPK started using this, and now he has his क्या कहना चाहिए, उसके जो अलमबरदार हैं वो और शहरों में भी जा के ये दवाई मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर्स में और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट थैलिडोमाइड के साथ आ रहे हैं। The side effects I have seen with thalidomide so far, people जिन्होंने यूज की और वो मेरे पास आए, वो पॉलिन्यूराइटिस है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं और CVAs हैं, इनके साथ आए हैं। और वन ऑफ माय कोलीग्स हु इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट, और हम दोनों आपस में बहुत शेयर करते हैं चीजें, मोहम्मद नवीद, who has done an MSc in hematology from England,
तो उसके पास 2 पेशेंट्स की डेथ भी हुई है। जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है वो कह रही है कि अभी तक ऐसी डबल ब्लाइंड हम स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च नहीं कर सके ऑन द सेफ्टी ऑफ दिस ड्रग इन थैलेसीमिया। तो जब तक हम वो मुकम्मल नहीं करेंगे हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे हाथ रोक के रखना चाहिए। अगर हमारी अपनी स्टडी जो है वो कंपाइल हो गई तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी हुई नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? मुबीन, मेरा तो ख्याल था कि बहुत सवाल पूछेंगे लोग मुझे। जी मैडम, ये क्वेश्चन है डॉक्टर जारा का कि आयरन क्लेशन के साथ कौन सी चीजें ना खाया करें आयरन को, कि आयरन ना बढ़े। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग खुद ही सर्च आउट कर लें। एक सेब के अंदर 4 से 5 मिलीग्राम आयरन होता है। इसी तरह से एक अनार में 5 से 6 मिलीग्राम आयरन होता है। तो उस बेचारे को क्यों महरूम करते हो सेब खाने से? एक 4-5 साल का बच्चा कितना सेब खा लेगा? आधा सेब खा लेगा। अनार के कितने दाने खा लेगा? जितने भी खा लेगा, मेरा नहीं ख्याल कोई खास फर्क पड़ता है। आई डोंट डू डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इन थैलेसीमिया, रीजन बीइंग that as it is, the treatment is so difficult to be compliant with. And then to say कि ये भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, I don't think so that is on. Poverty line से हम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। अरे भाई, जो उनके पास है खा लें। हाँ, ये कर सकते हैं कि मैं पर्सनली ये करती हूँ कि मैं उनसे कहती हूँ कि आपने कलेजी नहीं खानी, चाहे वो बकरे की हो चाहे वो मुर्गी की हो, और आपने जूस निकाल के नहीं खाना। उसकी वजह यह है कि when you make juice out of these, then you use lot of it. एक सेब से तो इतना जूस निकलता ही नहीं है ना कि वो आधा गिलास हो जाए या पूरा ग्लास हो जाए। तो अगर आप ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो इट्स ओके। अदरवाइज एक पेशेंट जिसको ब्लड लगता है, आप 200 मिलीग्राम उसको हर महीने दे रहे हैं और उसके लिए आप चिलेटिंग एजेंट दे रहे हैं। तो अगर वो सारे महीने में रोज भी 5 मिलीग्राम आयरन खा ले, जो कि वो नहीं खाएगा, एक पूरा सेब रोज किसको मिलेगा? हमारी जो पॉपुलेशन जिसमें थैलेसीमिया है, तो वो क्यों नहीं उस चिलेटिंग एजेंट से बाहर निकल सकता जो आप ब्लड के लिए यूज करेंगे? तो आई थिंक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इन एनी केस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और वो भी आप उन बच्चों के साथ जिनको आपने सुइयां चुभोनी है और जिनको आपने मतलब रिएक्शंस भी कराने हैं और जिन्होंने किसी भी बीमारी के सीरियस हो जाने में मरने का डर है, और फिर जब उनके जानने वालों की डेथ्स भी हो जाती हैं, और सारे एडल्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो हर वक्त यही डरे रहते हैं कि हमारा टाइम कब पूरा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की तरफ से तवज्जो हटा दें। मैडम मैडम ये एक और क्वेश्चन है डॉक्टर बिलाल की तरफ से कि व्हेन टू बिगिन आयरन क्लेशन इन ट्रांसप्लांट इंडिपेंडेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिया। मैंने कट ऑफ दिया था 800 नैनोग्राम पर ml, 800 नैनोग्राम पर ml। ठीक है। और ये भी बता दूं कि हाँ, वो मैंने आपसे पॉइंट शेयर नहीं किया कि चलेशन स्टॉपेज का भी मेरा एक पॉइंट था कि व्हेन टू स्टॉप चलेशन। अच्छा, चलेशन स्टॉप नहीं करनी होती। जो थैलेसीमिया मेजर में यू शुड एम टू रिड्यूस द सीरम फेरेटिन लेस देन 500 और इंटरमीडिया में लेस देन 400। लेकिन उस पे भी आपको जो ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट थैलेसीमिया है उसमें आप लोअर डोज पे चले जाएं। जैसे 20 to 40 है डीफेरेसिडॉक्स, तो आप 40 से दे रहे थे, तो आप 20 पे चले जाएं और 3 महीने के बाद दें, शुरू कर लें अगर मॉनिटर करके सीरम फेरेटिन। लाइकवाइज ट्रांसफ्यूजन नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया में भी जब आप 400 पे जाते हैं तो अपनी चिलेशन को जारी रखें 3-4 महीने, फिर दोबारा सीरम फेरेटिन कराएं। अगर वो 200 पे आ जाता है
तो फिर आप स्टॉप कर लें। लेकिन जब आप चलेशन स्टॉप करें तो 3 महीने के बाद ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट में और 6 महीने के बाद ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट पेशेंट में सीरम फेरिटिन दोबारा कराएं। जी मैडम। मैडम इसी तरह का क्वेश्चन डॉक्टर सामा ने पूछा है, वो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें अगर हम आयरन क्लेशन शुरू करते हैं तो कौन सा एजेंट लेना चाहिए। किसमें बेटा? मैडम ये थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में, नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिया में आप चाहे उसे क्या कहते हैं ओरल ही यूज करें, चाहे डीफेरासिलॉक्स यूज करें, चाहे, और अगर आप हाइड्रोक्सी यूरिया दे रहे हैं तो आपके पास चॉइस ही नहीं है सिवाय डीफेरासिलॉक्स के, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया और डीफेरिप्रोन तो इकट्ठे दे ही नहीं सकते, ओरल ही शुरू करेंगे। जो लेटेस्ट इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस मैं भी आज देख रही थी आने से पहले, उसमें तो वो कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले आप डेस्फेरॉल यूज करें। और ताहिर को शायद याद हो कि मैं भी पहले डेस्फेरॉल यूज किया करती थी, और उसमें मेरा ये था वो कि अगर आप स्टार्ट डेस्फेरॉल से करेंगे तो जो आपके पेशेंट्स हैं वो पहचान जाएंगे कि डेस्फेरॉल एक इंजेक्शन है और इसको कैसे लगाते हैं। तो बाद में अगर आपको कभी कंबाइंड या कंटिन्यूस इंट्रावीनस थेरेपी देनी पड़ेगी तो वो पेशेंट जो होंगे वो एप्रीहेंसिव नहीं होंगे। लेकिन मेरी इस चीज को मुझे छोड़ना तब पड़ा जब डेस्फेरॉल जो है वो अफोर्डेबल नहीं रहा और उसकी सप्लाई जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती। जी मैडम। मैम, here is a question from Bushra. Madam, what are the indication for combining 2 oral chelators and 1 IV plus oral? And what is the difference between these two? जो इंट्रावीनस है वो आपकी फ्री आयरन को बहुत जल्दी निकालती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में आपको ये ख्याल हो कि कोई ऑर्गन डैमेज ज्यादा है, जैसे कार्डियक या एंडोक्राइनल या लिवर, तो आप इंट्रावीनस के साथ उसको कंबाइन करें। ठीक है। और दूसरा आपने क्या पूछा कि इंट्रावीनस में क्या कब यूज करना, और एक और था पॉइंट। What is the difference between these two? Combining Which two? oral and combining oral with IV. हाँ, आईवी उधर ही यूज करेंगे जहां पे आपको ये ख्याल होगा कि कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, जैसे कार्डियक फेलियर है, लिवर फेलियर है, रीनल फेलियर है, या इस तरह की कोई चीज, या एंडोक्राइनोपैथी है रीसेंट, तो उधर आप आईवी जो है उसको ज्यादा वो करेंगे, और अदरवाइज आप ओरल दो कंबाइन कर सकते हैं। मैडम एक और क्वेश्चन है डॉक्टर सामा का, what are the new developments in iron chelation therapy and what are the challenges and opportunities in accessing iron chelation therapy in resource limited settings? बेटे इसमें बहुत ज्यादा काम इस पे नहीं हो रहा, ज्यादा काम इस पे हो रहा है कि आयरन लोड को कैसे कम किया जाए। अभी एक ड्रग जो कि काफी मुल्कों में आ गई है, उसमें ये होता है कि आपका ट्रांसफ्यूजन का जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है, मीनिंग देयर बाय दैट यू गिव लेस आयरन टू द पेशेंट। लेकिन जो ड्रग्स और कोई ऐसी है नहीं जो कि मेरी उसमें है इंफॉर्मेशन। Okay, madam, here is a question. What is your recommendation of bisphosphonate therapy in osteoporosis and thalassemia in thalassemic children? Osteoporosis is a huge problem in my adult patients, and the recommendation is that in osteoporosis जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पहले देखें कि आपके पेशेंट के हार्मोन्स कैसे हैं। ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम और विटामिन डी देखें, लिवर फंक्शन देखें,
आप जो ओरल आयरन दे रहे हैं अगर वो हाइड्रोक्सीलेटेड नहीं है तो आपको हाइड्रोक्सीलेटेड विटामिन डी शुरू करनी चाहिए। अगर आपके जैसे लिवर डिरेंजमेंट में आप ओरल विटामिन डी दे रहे हैं लेकिन अगर वो वहां पे हाइड्रोक्सीलेट ही नहीं हो रही लिवर में और किडनी में तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप यू कैन गिव जैसे बॉन 1 है, अल्फा 1, इस तरह की चीजें, अल्फा कैल्सी डॉल वगैरह यूज करें। दूसरी बात यह है कि सेक्स हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में देखनी है। और अगर आपका ख्याल है कि आपका SMR जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, फिर आपने हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी करनी है। बिसफॉस्फोनेट और उसके साथ आपने एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजियोथेरेपी ये करनी है। और bisphosphonates come very late because most of the bisphosphonates for longer periods जो है आपको पता है कि इतने रिकमेंडेड नहीं होते। तो जितना लेट आप bisphosphonates पे जाएं उतना ही अच्छा है, unless a child has a pathological fracture or a fracture accidentally and there is delayed healing with osteoporosis. Ma'am, here's a question from Dr. Zara. Should we recommend thalassemic patient to get married and have kids if their hormones and other labs allow? We have one couple, both husband and wife are thalassemia major and on hydra and thalidomide. Getting married, having children is a choice of a person, and you cannot take that choice away from that person. What you can do is that you have to sit both of them together and explain to them that their chances of having a normal child are not there. Unless one person is a heterozygous intermediate, right? And the other person has a milder mutations, then also every pregnancy will need a PCR examination to see that the offspring is only a carrier and not anti-DT or TDT. You can also explain to them that if you want to get married, then you should be ready to adopt the child. If you want to have a child, then you will have to go for adoption. Because for you, going to have a normal child is not going to be possible. And I have two couples who are both thalassemia major and they are married. They don't have children क्योंकि उन दोनों को मैंने काउंसिल कर दिया हुआ था। अब वो बच्चे जो हैं अब वो 40s और लेट 30s में हैं दोनों कपल, लेकिन उनको पता है कि they have to adopt if they want to. Okay. Madam, here's a question from Dr. Tahir. Some patient demand for a short course of IV chelation, but otherwise are not compliant. Is it a good approach to give a short-term IV chelation? नहीं कहते हैं वो शॉर्ट टाइम है, मेरा तो ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। पेशेंट जो भी कहे आप उससे एग्री कर जाएं, अगर वो उसके लिए कोई डेट्रीमेंटल चीज नहीं है। उसकी वजह ये है कि थैलेसीमिया के डॉक्टरों को थैलेसीमिया के बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता अस्तवार करना है, बहुत मोहब्बत करनी है और इतना उनके साथ अपना अच्छा रखना है रवैया कि वो आपकी हर बात माने, बिकॉज वरना तो वो इलाज ही नहीं कराएंगे। तो इसकी कोई शॉर्टकमिंग तो है नहीं, अगर वो चाहते हैं इंट्रावीनस लेने के लिए तो ले लें। सिर्फ उनको ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि देखो बहुत ज्यादा देर के लिए हम आपको नहीं देंगे, इंडिकेटेड इसलिए नहीं है कि अगर आपकी सारी वेन्स खराब हो गई तो फिर तो हमें एक पोटा कैप डालना पड़ेगा ना आपको ब्लड लगाने के लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो आपको सारी जिंदगी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें और उसके बाद जो भी उनकी ख्वाहिश हो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं और उनको let them make an independent free decision about themselves. ठीक है। Here's a question from Hina. If there is concomitant thalassemia major and sickle cell anemia, findings of which hemoglobinopathy will be masked? थैलेस के बहुत से पेशेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, और ये ज्यादा उधर से हैं, भक्कर से हैं, सिंध से हैं, अफगानिस्तान से हैं। ठीक है,
इसमें ये इशू ही नहीं है कि कौन सी हीमोग्लोबिनोपैथी जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज लकी फॉर अस whether it is thalassemia or hemoglobin S, they both will respond to hydroxyurea. हमारे लिए क्या इशू है? हमारे लिए ये इशू है कि we have to explain to them the crises, how to deal with the crises जो इनमें आते हैं सिकलिंग की वजह से, and how to go about with pregnancies and other things. लेकिन इसमें हमें कोई इशू नहीं है. थैलस के पेशेंट्स they usually do quite well. Even sickle patients do quite well. हमारे सिकल के पेशेंट जो हैं वो अब तो बहुत बड़े भी हो गए हैं और जॉब्स करते हैं, पढ़े लिखे हैं. Madam, can I थैलस say तो कोई something? प्रॉब्लम. जी Am I जी. allowed to say something? You are mentioning Bakkar and all that, but Professor Taib will second me that in our part, north of the Pakistan, शकरगंज, we are from शकरगार्ड होती है. Dera Ismail Khan and Waziristan. Most of the patients in Pindi, Islamabad, which we have seen from sickle cell, and many of those have combined co-inheritance. They are majority from the Dera Ismail Khan and Koistan. There is few tribes, Botani tribe or something like that. जी, Professor Taher might have second me आप in this. सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे ड्रेन करता है जनूबी पंजाब No doubt. और सिंध और कराची वगैरह ना, इधर के जी. लोग आते हैं. आप लोगों के पास ज्यादा वो लोग आएंगे जो दूसरी North. साइड से हैं, तो डेफिनेटली हमारी फर्क होगा, डेफिनेटली. मगर थैल एस एंड थैल ई बोथ एंड थैल डी थर्ड, ठीक है, ये दे बिहेव वेरी वेल, मोस्ट ऑफ देम दे बिहेव वेरी वेल. थैल एस वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं. That co-inheritance make the disease good. In other way around. Yeah. Yeah. It's a better disease than thalassemia major or sickle cell anemia. It's a better disease to have. If they have thalas, they do better. Now I request Professor Nadeem Ikram to please take over the session. No, indeed, it was a very delightful session. A special thank to Professor Jovaria. And the main, other than the topic, the main thing was we have around three very distinguished people like the Professor Jovaria, then Professor Samia Naimullah, and Professor Khalid Hassan. All these people, they are excellent people, and then in their own right, they are excellent academician and clinician. And I will like to say one thing that without any hesitation, allow me to say that these people, they are like an oasis in our barren land, which is still have a strong thirst for human values and human care. और अगर मैं ये भी कहना चाहूँ कि ये वो लोग हैं, ये असातिज़ा वो हैं कि जिनमें बिला मुबालगा मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे असातिज़ा की जो खूबियाँ हैं वो खुशबू की तरह रची हुई हैं, फूलों की तरह सजी हुई हैं और कौसे कज़ा के रंगों की तरह निखरी पड़ी हैं. और बिला मुबालगा मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनसे कुछ किरणें चुरा कर हम जैसे लोगों ने अपनी उम्मीदों, तमन्नाओं और ख्वाहिशों की सलाहियतों को की लौ को जलाने की कोशिश करी है. निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे. Then first, the Professor Samia Naimullah, he has a long services in the Pindi, Islamabad and north of the Pakistan, starting from the Rawalpindi Medical College, then Islamic International Medical College, as a diplomat, American board. Her empathy, clinical acumen, and the medical ethics all are exemplary, and we all are witness to it. Then the second, Professor Khalid Hassan, no doubt, wherever he served or he is serving, he left behind a strong imprint. He is a man with, we can say that the unmatched integrity and as far as his services are concerned from the medical practice, education, research, publication, they are worth to mention. And as far as the thalassemia is concerned, wherever he served or is serving, he used to take good care of the thalassemics. Then the third, the most important, our guest, Professor Jovaria Mannan, thanks to Professor Tahir that we witnessed her work in the thalassemia. She worked in the Fatma Jinnah Medical College, then Gangaram, and then as you people
mentioned that she is still this chairperson of the board of director of the Pakistani Thalassemia Federation. And as far as I know from this, since so many long years, I've seen that she is no doubt very safely can be taken as the torch bearer of the thalassemia care and cure in the Pakistan. And then she has a long lasting impact on the shadows on so many people or the fellows or the student. Most importantly, we thanks to the Professor Jovaria that we have one of his strong disciple, or you can say the mentee, that is the Professor Tahir Chaudhary. That I want to say, and thank you, madam. Thank all the other listeners. Shyam ji, okay ji. Allah Hafiz. डॉक्टर मुबीन आप रिक्वेस्ट करिए मैडम से भी और प्रोफेसर खालिद हसन साहब से फिर आखिर में सर मैडम आप प्रोफेसर समिया नईमुल्लाह सब ऑडियंस के लिए और मैडम के लिए आप अच्छे कलमात कुछ कहना चाहें प्रोफेसर समिया नईमुल्लाह प्लीज मैडम कल How about Professor Khalid Hassan first? Can you hear me? सर प्रोफेसर खालिद हसन साहब हाँ जी. मैडम सर डॉक्टर खालिद हसन साहब जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं. अच्छा, am I connected? यस सर. अच्छा. Okay, let's just take it. Baharal, these 2 hours have been wonderful with everybody. Or Dr. Tahir has been doing all these workshops on PIMA, which are very academic every time he does it, and he does it wonderfully. Pehli to baat hai, I'm so happy to see Dr. Jovaria. We have together, you know, friendship of more than 50 years. Now you can, हमारी उम्रों का भी आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं इससे. जी? Okay. And Jovaria had been working with these kids for almost 45 years, and it is not easy. Taking thalassemia, starting from kids when they used to die at 5 years, 6 years, and even younger, and carrying them to the age where they are married and they have kids. Wonderful, Jovaria. Your consistency, your hard work, your sincerity with these kids have really taken Pakistan along. It's not only in Pakistan, I would say internationally as well. I'm thankful to the team with Professor Tahir, Dr. Mubin, Dr. Bilal, Dr. Amara, who's worked hard to make this a success. हमारे लिए तो ये 2 घंटे हैं, but the time that has taken behind it is really a very long time. Talking on the session, I would say that the things have been made so clear. हर दफ़ा आप सोचते हैं which medicines to start, which iron chelator to start, how to add. She has beautifully described it. और हम खुद भी बहुत दफ़ा मेरा ख्याल है कि probably it's an eye-opening for everybody that she has really described in which situation to start which drugs. और उसमें इतना उसको easy कर दिया है कि मेरा ख्याल है कि इतना easy हो नहीं सकता. Because I was also reading, एक तो फ़ायदा ये है जब प्रोफेसर ताहिर बुलाते हैं तो कुछ हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आज जवेरिया से सीखा है वो पढ़ने से बहुत ज़्यादा है. I think it's for everybody. First we used to start iron chelation at the age of 4 years. Now when I was reading, of course we always say 10 to 12 transfusions, and I would like Jovaria to really answer, should it be started by 1 year of age? Because some places say it started at 1 year of age and the others say it should be started at 2 years of age. Would you just tell me? Yeah. Before. It is not good to start DES for all in the early age because, you know, it interferes with the growth because it affects the ये जो प्लेट होती है आपकी बोन्स के दरम्यान क्या कहते हैं इसको इसकी वहां पे होती है ना ग्रोथ रिटार्डेशन लेंथ मतलब इनकी हाइट कम हो जाती है
ठीक है? एपिफिशियल ग्रोथ। अगर आपको एपिफिजियल ग्रोथ अगर आपको करना पड़े स्टार्ट छोटी उम्र में करना पड़ जाता है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ करना पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन एच डिजीज में करना पड़ जाता है, क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं ये या ब्लैक फन डायमंड में करना पड़ जाता है। हमें और चीजों में भी तो चिलेशन करनी पड़ती है ना, सिर्फ थैलेसीमिया में थोड़ी करनी पड़ती। तो उसमें ये होता है कि आप डेस्फोरॉल को अवॉइड करें, क्योंकि ये एपिफिजियल प्लेट पे इसके साइड इफेक्ट आते हैं और फिर टोटल हाइट कम हो जाती है। लेकिन आपको डीफेरासिरोक्स यूज करने में कोई कबाहत नहीं है, लेस देन 2 years कोई मसला नहीं है। आप कर सकते हैं, सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. Another thing is, okay, when we are talking of using two oral drugs together, is that better with, no, I think probably it depends how the patient comes to you. If it's coming in cardiac failure, you're going to Yeah. start with cholesterol and defriprone. Another thing Defense, yeah. about defriprone is, okay, if you read the literature, and I think it's good from your experience, this describe agranulocytis is a lot, so you have to do the blood works almost every 3 weeks or every 4 weeks. What do you think about it? जो रिकमेंडेड है उनका वो तो वो कहते हैं कि आप 10 days पे करें, और हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा इस पे फर्स्ट नहीं करते क्योंकि मैंने तो देखे नहीं साइड इफेक्ट्स। और जब भी कोई बच्चा जो है वो ब्लड लगवाता है तो वो जरूर सीबीसी करता है, चाहे वो सुंदस हो, फातमीद हो, जमीला सुल्ताना हो, मेरा कोई हो या कोई भी हो, वो सीबीसी जरूर कराते हैं। तो जब सीबीसी कराते हैं तो अगर कोई इसका साइड इफेक्ट हो तो पता लग जाता है। लेकिन मैंने इस पे स्टडी की हुई है, रोल ऑफ इसमें डीफेरिप्रोन पे भी, हाइड्रोक्सी यूरिया पे भी, ये सारी चीजें मैंने की हुई है, ट्राई की हुई है। तो मुझे नहीं ख्याल के कोई मसला है हमारे लिए। Okay, thank you हमारे so लिए much. जो मसला मैं देखती हूँ ना है वो ये है कि एक जनरली डॉक्टरों में जो मसला है वो ये है कि जो हमारे टोटल डॉक्टर्स है ना, वो जब सुन एंड डेंटिस्ट एंड सर्जन, वो जब सुनते हैं ना, इवन ऑर्थोपेडिक, वो जब सुनते हैं ना कि इसको थैलेसीमिया है, तो वो उसी वक्त चाहते हैं कि इस मरीज को हाथ ना लगाएं, छोड़ दें इसको। फॉर इंस्टेंस एक बच्चा मेरे पास आया पिछले ओपीडी में, और उसकी मां बेचारी कह लगी कि ਤੁਹਾਡਾ बड़ी दूरों मैं पता करके आई हाँ, मेरे बच्चों ਦੀਆਂ दोनों ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡਾਕटर ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ, तो मैंने वो एलआरबीटी फोन करके उस सर्जन से कहा कि भैया थैलेसीमिया में हम स्प्लीनेक्टमी कराते हैं, ठीक है, हम थैलेसीमिया में पॉलीसिस्टेक्टमी कराते हैं, परफोरेशन इंटेस्टाइनल जो होती है उनको ठीक करते हैं, हम रॉड्स डलवाते हैं फ्रैक्चर्स में, सारा कुछ हम करते हैं। तो कैटरेक्ट की सर्जरी में तुमको क्या मसला है, हीमोग्लोबिन का या प्लेटलेट्स का? तो मतलब ये एक ऐसा है अभी भी बहुत ज्यादा, ऑर्थोपेडिक वाले भी हाथ नहीं लगाना चाहेंगे। डेंटिस्ट, मेरा बेटा इत्तेफाक से है तो मैं हर उस मुसीबत को डिमांड भेज देती हूँ और वो सब कुछ ही कर देता है इनको। लेकिन ये है कि वैसे कोई डेंटल हो तो कहे नहीं नहीं नहीं, आपका दांत नहीं निकाल सकते, आपकी वो नहीं कर सकते जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये थैलेसीमिया है। अब ये बड़ी खराब बात है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मेरा ख्याल है जो यंगर लोग हैं उनको ये चाहिए कि यंगर डॉक्टर्स में भी ये चीज जो है ना इसको और ज्यादा उजागर करें कि भाई थैलेसीमिक्स कैन लीड नॉर्मल लाइव्स, they can have normal operations, they can get married, they can have children। ये सारी चीजें बताने की बहुत जरूरत है, अभी भी पता नहीं है लोगों को। True. Javaria, you've really done a lot of work के अलावा नहीं, आपने awareness all over the country and all over international awareness भी आपने की है, or giving lectures everywhere, not only the lectures, even helping the patients out. So I would really say probably nobody could have done this. And finally, yes, finally, I would say Khuda Hafiz, or with the team that you have, I hope they can continue their good work.
और डॉक्टर नदीम इकराम ने, डॉक्टर खालिद हसन ने, सब ने थैलेसीमिया पे बहुत काम किया हुआ है। एंड वो भी टाइम थे जब हम पेशेंट्स को सेव नहीं कर सकते थे तो हम रोते थे। आई रिमेंबर कि वो हमारे एक टीवी एक्टर थे, तो बड़ी मुश्किल से 2 साल 2.5 साल हमने उस बच्चे को थैलेसीमिया से बचाया। एंड व्हेन आई वेंट टू स्टेट्स तो मैं हैरान हो गई कि हमारे पास 15-18 साल के भी बच्चे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी इन पाकिस्तान, वी आर नाउ सीइंग मैरिड किड्स। थैंक यू सो मच। बहुत Thank you, madam. शुक्रिया, खुदा हाफिज। Jazakallah, madam, for your kind words, and thank you very much, madam, Dr. Jovaria Mannan, for a truly enlightening and clinically relevant presentation. It's a gentle reminder for the participants to please complete the post-test and fill the feedback form. Completion of both is essential to qualify for your e-certificate. We thank each of you for your participation in today's important academic event. एक मिनट आप मुझे देंगी? जी मैडम, जी सर। मैं बस सब पार्टिसिपेंट से ये भी गुजारिश करनी है कि हमारा कन्वेंशन पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का, जिसका बिल्कुल आगाज़ में ई फ्लायर सब ने देख लिया होगा, इंशाल्लाह 11 तारीख को इतवार वाले दिन फैसल मस्जिद के अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में होगा। तो इसलिए मेरी सब शुरका से ये भी गुजारिश है कि लोग अपने वक्त में से, अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के उस दिन कन्वेंशन में भी शरीक हों, खासतौर पे वो लोग जो ट्विन सिटीज़ और उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जी डॉक्टर मुबीन, आप प्लीज कंटिन्यू करिए अपने पोस्ट टेस्ट और फीडबैक के लिए। ठीक है जी, मुझे इजाजत है जी। ये बेटा बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह ताला आपको जो आफियत और इस एनर्जी के साथ लंबी उम्र दे कि आपका साया मरीजों के लिए भी और हमारे सीखने के लिए भी तादेर का थे। बहुत शुक्रिया आपका जी। इजाजत तो नहीं है वैसे जवेरिया, लेकिन आप जा सकती हैं। नहीं, एक्चुअली ना ये वाले 2 हफ्ते बहुत बिजी हैं और मेरी 4:30 बजे कहीं और है, तो उधर भी मैंने जाना है। तो 4 बज गए हैं, तो आई वाज लुकिंग एट द वॉच एंड आई थॉट आई हैव टू हरी अप। वो करना है क्योंकि सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जब कोई थैलेसीमिया का प्रोग्राम करें तो मैं जरूर शामिल हूँ। तो इसलिए मुझे इजाजत दे दो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप लोग कोई वहां पे ऐसा प्रोग्राम करे कि मैं खुद आऊं और तुमसे मिलूं, क्योंकि ये भी एक मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं समिया से मिल लूं बाकी लोगों के अलावा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो सलामुअलैकुम मैडम। हेलो सलामुअलैकुम मैडम। मैडम आपका भी प्रोफेसर इकराम साहब, प्रोफेसर नजर खालिद नहीं आ हसन रहा। साहब, आपसे वज़ारत के भी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, अब सामने लिखा हुआ आ रहा था, शक्ल नजर नहीं पहले आ रही थी। ओके बेटा, अच्छा जी, हाँ सलामुअलैकुम मैडम। डॉक्टर उमीला बात कर रही हूँ मैं। हेलो सलामुअलैकुम मैडम, मैं डॉक्टर उमीला बात कर रही हूँ ज़ैनबिया ब्लड बैंक से। सर मैडम आपकी जनीबिया से बहुत याद आ रही थी कि आज आप हमें है ना, बहुत अच्छा लगा मैडम आपका लेक्चर सुन के। मैंने बहुत सारी चीजें आपसे ही सीखी है हमेशा, और आज भी मुझे बहुत सारी चीजें आपसे पता पड़ती हैं, और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मैडम से मुलाकात ही नहीं होती जी। हाँ ये बात सही है, नहीं इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ जी, प्रोग्राम है कि कब कराची में होगा एक बड़ा इवेंट, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। पूछता हूँ नंबर मैडम से। फीडबैक दोबारा शेयर कर दें। घर का नंबर क्या है? ये रिमाइंडर शेयर कर दिया। 175 175 है। गार्डन। मैडम आपका और प्रोफेसर नदीम इकराम साहब का खास तौर पे बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। जो आप इस इवेंट पे बुलाया एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू शेयर, थैंक यू। अब इजाजत है डॉक्टर ताहिर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी शुक्रिया जी। बाकी तो जो हमारे यंग रेजिडेंट्स और बाकी सब हैं उसके लिए ये जो फीडबैक, और वो तो उन हज़रात के लिए जो PME के लिए यहाँ पे
ठीक है जी, देखा तो थैंक वो यू। लोग बस 5-7 मिनट में फिल कर ठीक लेंगे, है फिर जी, इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर देंगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। With this, we will conclude our session. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.